हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड। सो डियर लर्नर्स पाखापाखि घंटा तले मु 2017 2023 भितर 2022 भितर आसीथिबा अकाउंटेंसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रो एमसीक्यूज गुडी को डिस्कशन करथिली। आशा करूची समस्त देखिथिबे एवं आज रो वीडियो रे आमे कोन करबा 2023 रो रेगुलर क्वेश्चन 2023 रो एक्स रेगुलर जोटा कि तम मानको पई भी रेगुलर पिला मानको पई रिलेवेंट रहइबो 40 टा भलो क्वेश्चन आमे क्विकली देखिबा। देन 2024 रो क्वेश्चन मध्ये देखिबा। पिला हमर गोटे हिंदी चैनल अछि कॉमर्स एप्टीट्यूड ना रे पूर्व वीडियो रे भी मु कहितली जदि पारिबो से चैनल को मध्ये सब्सक्राइब करी सपोर्ट दे देबो। शेष थर पई हमर देखा चाह रही। आशा करुच्ची पुणी थर ग्रेजुएशन तुम पढ़ो जदि आमर पुणी यूट्यूब माध्यम देखा चाह रही समस्त को पुणी थर मु बेस्ट विशेष जनाऊँगी आसंता कालीर एग्जामिनेशन हुए तो वीडियो नेक्स्ट आसीपे न आसीपे बट एनीवेज विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन एडवांस। चलो 2023 क्वेश्चन आज आम डिस्कशन आरंभ करवा। एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड एसेट कहला माने पिले कैश हो स्टोन करी होची गोटे को एसेट पिले वेस्टिंग एसेट। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड कही कैरेज आउटवर्ड माने सेटा होची पिले गोटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड कहितले सेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होइतांता। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज माने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो एटा गोटे हिजबो कोन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड लीगल चार्ज कही प्रीपेड कही माने गोटे एक्सपेंस को एडवांस दोचो। सो एटा हिजबो गोटे कोन तमरो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज एन एग्जांपल ऑफ हेवी एडवर्टाइजमेंट कहला माने पिले तुम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पिक करिवो। डोनेशन रिसीव फॉर ए स्पेशल पर्पस में डोनेशन रिसीव करछो माने गोटे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बा एनपीओ पई पिले एटा हिजबो गोटे लायबिलिटी। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कैश इन हैंड at the end of the year. Okay, receipt payment account prepare करा जाए to know the cash in it at the end of the year. Income and expenditure account prepare करा जाए to know the excess of income over expenditure. receipt payment account कहा बदल रे prepare करा जाए कैश बुक बदल रे। income and expenditure account कहा बदल रे prepare करा जाए profit and loss account बदल रे। एटा मन रखिबो। gross profit is revealed by the trading account, net profit by the net profit and loss account. Next, income and expenditure account is prepared to know the excess of income over expenditure. Profit and loss appropriation account is prepared to know एथिर देखो सब अकाउंट रो पचार दूची से कोन जणा पड़े। ओके, तो एटा मन रखियो तमे टू नो द appropriation of profit. Next, current account of a partner always shows either debit or credit. Debentures holder gets interest. ओके, दुई मार्क देखी देबा वन वर्ड छाड़ी दियो वन वर्ड वाला। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ एसेट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क होची गोटे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। Where is closing stock shown in the final account if given in the trial balance? Trial balance भीतर देइथिले closing stock टी only on the asset side of the balance sheet हबो। Okay, next, how should the partners share profit if there is no mention in the partnership deed? partnership deed जदि किछि मेंशन नाही, पार्टनर्स माने इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करिवे, डिवाइड करिवे। चलो नेक्स्ट अछि करेक्ट द अंडरलाइन पोर्शन। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ अ न्यू मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. Annual repair to an existing building is a revenue expenditure. At the time of admission of a partner, sacrificing ratio is calculated. Retirement बा तमरो death case रे gaining ratio compute करा जाए. Calls in arrear is a current asset. Sundry debtor is a current asset. Okay. If drawings are made at the middle of every month, even throughout the year, interest is charged on the total drawings for 6 months. Okay. चलो 2023 रेगुलर पिलांकर क्वेश्चन देखीदेले। एबे एक्स रेगुलर देन आमे 2024 पिलांकर क्वेश्चन देखिबा। ओके, सो 2013 एक्स रेगुलर पिलांकर क्वेश्चन एटा देखो पिले मु एबे भी संध्या बेले ही तुम क्लास रेकॉर्ड करूची। वीडियोटी हुए तो केतल आसीबो देखो ऊपर लेफ्ट साइड रे 26 मार्च 6:23 एबे संध्या आइची बुधवार। ओके, ता माने फ्रेश वीडियो ही तुम पई आछी। चलो 2023 रो अकाउंटेंसी एक्स रेगुलर पिलांकर क्वेश्चन रेगुलर पिलांक पई भी रेलेवेंट रहइबो बिकॉज क्वेश्चन सेम अछि। कॉपीराइट होची गोटे को एसेट पिले इंटेंजिबल एसेट कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क गुडविल लाइसेंस पांचटा मन रख। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. व्हेन एसेट्स आर रिवैल्यूड एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू. एसेट रो वैल्यू डिक्रीज होची एले पिले एसेट टी तमरो क्रेडिट हबो एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट टी डेबिट हबो. नेक्स्ट, सब्सक्राइब कैपिटल कहले कौन बुझुच? द अमाउंट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. ओके, नेक्स्ट, यस कमिशन अकाउंट होची कमिशन गोटे एक्सपेंस हो पारे गोटे इनकम हो पारे तो यहाँ आमर नॉमिनल अकाउंट अंडर आसीज. आज पर द कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी कैन इश्यू टू टाइप्स ऑफ शेयर इक्विटी एंड प्रिफरेंस. प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स गेट priority over equity shareholder in payment of dividend and refund of capital both hijibo. Okay, the asset on which depreciation is charged fixed asset. Next, accrued income means income earned but not yet received is an asset.
Annual repair to building is a revenue expenditure. The profit on revaluation of assets and liabilities is shared by old partners in old profit sharing ratio. Okay, next, outstanding rent appearing in the trial balance will be shown on the liability side of the balance sheet. Okay, so balance sheet only. Closing stock is shown in final account, is shown final account at what price? Cost price or market price, whichever is less. Very important question. On yes, on forfeiture of shares, the share forfeiture account is credited with the amount already received. The amount not received, no. The amount received on share forfeited, yes. The nominal value of share, no. The called up, let it be. An example of fixed asset is furniture. When shares are allotted, the one of the following accounts to be credited. Shares allotment account. Credited means share allotment account debited to share capital account. So share capital account is the correct answer. Okay, where is share capital account? Option IV. The excess of actual profit over normal profit is called super profit. Partners' current accounts are opened when capitals are fixed. This is an additional account. One of the following which is not deducted from capital of a sole trader, that is net profit, because it will be added with the capital. Remaining three will be deducted. Marshalling of balance sheet means arrangements of assets and liabilities. Next, question number 2. 20 more questions. One of the following which is a current asset. Which one is the current asset? Cash in hand. Next, one of the following assets which is assumed not to be depreciated, that is land or jewelry, ornaments you can say. These are appreciated, not depreciated. Interest payable on capital of a partners is charged to payable, means now it is not paid but in future we have to pay, that is payable, so it will be charged to profit and loss appropriation account. As per the provision of a table F of the Companies Act 2013, interest on calls in advance is payable by a company at, so interest on calls in advance is 12%, interest on calls in arrear is 10%. Remember, revaluation account is a nominal account. Shares can be forfeited. Shares can be forfeited for failure to attend the meeting, no. For failure to repay the loan, no. For failure to pay the allotment or call money, yes. This is the correct answer. Direct expenses are shown in the debit side of the trading account. Profit for last 3 years of a partnership firm were 30,000, 20,000 and 10,000. Value of goodwill at 2 years of purchase. Okay. So first average profit kadiba 30 plus 20 plus 10, that is 60,000 divided by 3, so that is 20,000. 20,000 into number of year of purchase kardele goodwill bharjiba, that is 40,000. Okay. Chalo. Manager commission of 10% on net profit of 2,20,000 after charging such commission. After charging such commission कही profit into rate by 100 plus rate. Profit होची 2,20,000 into rate होची 10 divided by 100 plus rate माने एटा हिजबो 110. ओके, तो 110 हो गले 11 दूने 22, तो ये आसी गला केते 2000 ले 2000 into 10 20,000 राइट आंसर हिजबो. Next, when liabilities are revalued, any decrease in the value of liability. Liability ର value कमिले पिले liability debit हुए, ताले पचारिछि debit किए होबो? Debit होबो revaluation account. Sorry, liability ର value बढ़िले liability credit हुए, debit हुए revaluation. Liability ର value कमिले liability debit होबो, so debited to liability account. On forfeiture of shares, the share capital account is debited with the amount received on shares forfeited, no. The called up amount कोडी अछि एठी अछि. The called up amount जेतिकी कॉल कराइथो सेतिकी share capital को debit करि दिया जिवो. When assets are revalued, any increase in the value of assets is debit to assets account. The equity shareholders of a company are the owners of the company. An old partner's capital account is debited when there is, debit माने जेतोले loss हुए पिले, debit balance in the profit and loss account. Profit on sale of machinery is credited to which account? Profit and loss account. Closing stock appearing in the trial balance only shown on the balance sheet. Amount spent on advertisement for a new product, तो गोटे बड़ धरणर amount expenditure हेतिबो, so एटा हिजबो तमरो deferred revenue expenditure. Income tax paid by a sole trader is deducted from capital account, so एटा हिजबो कोन liability side of the balance sheet as deduction from capital.
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होची गोटे लायबिलिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके नेक्स्ट सॉरी गला यस द 40 क्वेश्चन आम कवर अप करदे 2023 एक्स रेगुलर लेट्स मूव टू द 2024 रेगुलर क्वेश्चंस ओके फर्स्ट क्वेश्चन बैड डेट इज एन और ए लॉस हो पिले फर्निचर ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक शॉप इज अ फिक्स्ड एसेट example of wasting asset is oil well balance sheet reveals financial position outstanding subscription on a particular date of a non-profit organization is an asset life membership fee of a non-profit organization एटा हो लायबिलिटी कोडी हो लायबिलिटी हेले एटा कोन हो गोटे थर रिसीव हुए सो एटा कैपिटल रिसीट हो नेक्स्ट depreciation is a process of allocation of cost not the valuation of asset under straight line method of a depreciation the amount of annual depreciation straight line method is saman ruhe so remains constant every year in accounts from incomplete record system capital at the end of the accounting period is ascertained by preparing statement of affairs okay when assets are revalued any increase in the value of asset is debited to asset account ए बी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो एटा आई थिंक देख ए रेशियो ओल्ड रेशियो होची 3:2 अच्छी देन न्यू रेशियो होची 4:3:7 सैक्रिफाइजिंग रेशियो केते ओल्ड माइनस न्यू कर सो जदि ए रो काढिबा को चाहूछ ए रो ओल्ड रेशियो होची 3/5 माइनस तार न्यू रेशियो होची 4/10 जेति के आसीबो देखिबो बी रो ओल्ड रेशियो होची 2/5 माइनस न्यू रेशियो होची 3/10 जेति के आसीबो दीटा रो रेशियो देखिदबो तमरो आसी जिवो ओके क्या कॉल्स इन एरियर ऑफ अ कंपनी एरियर कहला माने एटा पिले एसेट गोटे ओके नेक्स्ट सेटा सरी गला देन वन वर्ड आंसर द अमाउंट व्हिच ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर बट कैन नॉट बी रिकवर्ड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सॉरी अक्रूड इनकम व्हिच इज ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर बट कैन नॉट बी रिकवर्ड आमे पाई परिबा नाही अक्रूड इनकम एटा एक्चुअली रिकवर हेइनी बोली सिकुची कैन नॉट बी रिकवर्ड कहला माने से अलगा क्वेश्चन हिजबो the amount received by a non-profit organization as per the will of a deceased person कौन हबो legacy okay in case of admission of a partner the ratio in which amount brought in by the new partner for the goodwill is shared by the old partner sacrificing ratio define partnership एवढा लेखिबो as per the companies act 2013 the maximum rate of interest paid on calls in advance ऊपर 2013 हिसाब रे केते 12% कॉल्स इन एरियर ऊपर इंटरेस्ट होची 10% माइन इज अ वेस्टिंग एसेट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स शोज द कटा होची क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी सो क्रेडिट बैलेंस फिल इन द ब्लैंक एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन व्हाइट वॉशिंग इन न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंडोमेंट फंड इज शोन ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ओपनिंग कैपिटल इज डिडक्टेड फ्रॉम एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल ओके to find out the profit or loss सरीगला ना अच्छी सरीगला तो पिले पाखापाखि आम 13 मिनिट 14 मिनिट भी या भी कभर अप करदे आशा करुँची दुईटी वीडियो तुमको काली बहुत हेल्प हम जो मैंने भी पढ़ी गोटे प्रॉपर रिवीजन हो जाइथिबो तो किसी ना क्वेश्चन पाइला पर तुमको लगे जो तुम सब पढ़ीच तुम पढ़ीच जोड़ा से ही परीक्षा आसो व्यस्त हबार किसी ना खाली आराम से धीर स्थिर भाव में क्वेश्चंस गुड़ी को अटेम्प्ट कर ओके आउ भावन जो लास्ट परीक्षा अच्छी तो पूरा तरतर केते शीघ्र मुझे सारिदेवी किसी ना सरीगला तापर आम डिस्कसन करवा तुम क्यारियर अपरच्युनिटीज उपर मु वीडियो आनी सो कनेक्ट हो जो मैंने पढ़ा पिला थी क्यारियर किसी करने को चाहूँ से ही जोड़िक रे अदरवाइज सब वर्ष मुझे देखी एग्जाम टाइम जमी वर्षा हेले सडन गोटे कौटी गोटे छात खोजती लोक मैंने छिड़ा हो वर्षा छाड़ी गले छाड़ी जीवे बहुत पिला 90% पिला यूट्यूब को कॉमर्स एप्टीट्यूड को सही मैंने ही आसती एग्जाम टाइम कौटी एमसीक्यू मिल जाए कौन जस्ट एग्जाम ओवर दे इग्नोर द चैनल ओके बट तुमको अलग वे भी हेल्प हो पार एवं से विषय किसी कथा हेनी एवं खाली परीक्षा विषय तुम पढ़ भल जाऊ समस्त परीक्षा से मोर बेस्ट विशेष सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमोरो एग्जाम।